सो हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास है सिमटैक का ये हज़ार्ड फ्लैशर। आई गॉट दिस फ्रॉम सिमटैक वेबसाइट एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर KTM 390 एडवेंचर एंड 250 एडवेंचर. So this is a retail box that you get while you order, and it says MRP as 1899, although I got it for 1249 using some promo code that was listed on the website. So nothing special on the box. Let's go ahead and unbox. Okay, the first thing you get inside the box is this Simtac branded sticker. Okay, I just will keep it to the side. Secondly, you get this warranty card. This says warranty for 24 months from the date of purchase. So जिस दिन आप बेसिकली इसको ऑर्डर प्लेस करेंगे इनके वेबसाइट पे उस दिन की परचेज डेट होगी. सो वारंटी काउंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट. एंड आपको ये कार्ड संभाल के रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लेम वारंटी इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ दैट हज़ार्ड फ्लैशर. Okay. Thirdly, you get the hazard flasher itself. So this is the main module. Again it says PNP ADV specifically for 390 ADV. So ये पूरा मॉड्यूल लाइक एकदम इनकेस्ड है लाइक पानी से बचाने के लिए. एंड वायर्स का क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड प्रिटी लाइट वेट. सो there are 6 ports though, 2 male and 2 female each, one for left and right. Color coding है, you can match this color or while on the OEM color coded indicator का जो switches होगा उससे आप match कर सकते हैं. Secondly, you get these 2 ports. These are for the auxiliary ports that you get on 390 Adventure. So you can install this. I'll show you how you can install this as we proceed ahead. Thirdly, any installation instructions? No. Okay, you got the zip tie. So okay, pretty handy. So I guess that's it from the box. Yeah, so that's it from the box. Let's go ahead and install this on the 390 ADV. So guys, I've currently installed the hazard flasher. So the first thing that you need to do is to remove the grab rails. You can unscrew these 2 bolts and you can remove the grab rails. Same as well on the right side as well. And then there are 2 bolts here, one being here, the other being on the other side, and आप ये back panel निकाल सकते हैं. And once you have removed the back panel, just have a hold of the grab hazard flasher and just pair the color coding. The male goes into the female goes into the male. Same for the gray ones. The male goes into female, the female goes into male. और इसके बाद जो 2 एक्स्ट्रा पोर्ट्स होंगे वो आपके एक्सरी पोर्ट में जाएंगे. यू कैन यूज़, देयर आर 2 एक्सरी पोर्ट्स, वन बीइंग दिस वन, द अदर बीइंग दिस वन. दो में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली जो ये वायर्स होते हैं बेसिकली यहाँ पीछे होते हैं, इसलिए हमें ये खोलना पड़ा था सेटअप पूरा. बट अगर इसको आप क्या कर सकते हैं, देयर इज़ अ पाथ हियर, इफ़ यू कैन सी दिस वन, देयर इज़ अ होल हियर. सो ये वायर्स को आप पास थ्रू कर सकते हैं एंड आप इसको अंदर अपने जो एक्सरी अपार्टमेंट होता है जहाँ सेक्शन आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, यहाँ पे एक फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है, यहाँ आप इसको ले लीजिए ताकि आप इजीली इसको कनेक्ट करके यहाँ रख सकते. बिकॉज देयर इज़ नो प्लेस एट द बैक कि आप ये हज़ार्ड फ्लैशर को रख सकें. सो डन विद द इंस्टॉलेशन. लेट्स जस्ट टर्न ऑन द मोटरसाइकिल. Not something to show you here, like the first time you turn on the motorcycle, both the indicators will turn on once. So you see that. Now to activate the flasher, you need to go left, right, center, and it just activates the flasher. You see, to go to the next pattern, again left, right, center, it went to the next pattern. To go to the previous pattern, you need to go right, left, center, and you see it again went back to the old pattern. Now to turn it off, on the indicator again just either go left or right. We'll just go left and we'll just close this, and you see it's turned off. Again if you need to start it again, left, right, center.
Now if you want to go regular indicators using left or right, you can just use left, and see you can use left or right, vice versa. Okay, I guess that was it from the video. Thank you guys. If you like this video, just share it with your friends, and please do consider subscribing to the channel. Yeah, thank you.